is our first video on class 12 accounts. Before proceeding with any topic, let us first discuss the syllabus. पहले हम लोग syllabus discuss करेंगे हमारे class 12 accounts के लिए. तो cbse में class 12 there are 3 books. Book 1, Book 2 and Book 3. Book 1 it deals with accounts or not for profit organization and accounts related to partnership. Second book relates to share capital and debentures. Third book it is analysis of company financial statement. So in class 12 we have to go through these 3 books. Accounts for not-for-profit organization, accounts relating to partnership. This is in one book, or this is the first part. Second, share capital and debentures. In this we will study about issue of shares, and debentures. Then for future of shares, redemption of debentures, in analysis of company financial statement, we will study about comparative balance sheet, comparative income statement or statement of profit and loss, common size balance sheet, common size income statement, and we will study about accounting ratio, and last is cash flow statement. In book we have to study about accounts for not-for-profit organization. In that we will study about income and expenditure account and receipt and payment account and balance sheets. Accounts relating to partnership, in this we will study about general accounting, then accounting when a partner is admitted, accounting when
old partner retires or death of a partner, and dissolution of partnership. So this topic we will discuss it later on. For the time, we will start with share capital and debentures, book 2. So let's start with the first lesson of book 2, that is issue of shares and its forfeitures. In book 2 we have three lessons. First is the issue of shares and forfeitures. Second is the issue of debentures, and third lesson is redemption of debentures. So starting with the first lesson, issue of shares and its forfeitures. What is share? हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझेंगे. व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. नाउ आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज अ कैपिटल. कैपिटल is the money that is owed by the firm. Capital, money or amount owed by the firm. The amount which a firms need to start its business, that amount is called as capital. So share is a part of capital. Now in a sole proprietorship or in a partnership business, capital is introduced by the sole proprietor himself or the partners. But when we come to the company, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो we know कंपनी it is an artificial person. वो अपने आप में एक पर्सन है ना. तो कंपनी get its capital through shares. कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है? शेयर से मिलता है. So I think everyone remembers कंपनी. हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं. BST क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, we have already discussed about the company. But for a brief, we can tell it as company is an association of person. Company is a association of person. It is an artificial person. Company has common seal. Perpetual succession. So all these are the different various features of a company. Here in class 12th, we did not have to go through all this theory part. We will discuss only those theory part which is related to shares and its forfeitures. एग्जाम में भी कंपनी अकाउंट से थ्योरी पार्ट उतना नहीं पूछता है. मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का ही होगा, और जो भी मेन थ्योरी है वो सब पार्ट क्लास 11th में कवर हो चुका है. सो मूविंग फर्दर, फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास बुक 2 क्लास 12 अकाउंट्स, हिस्ट्री ऑफ शेयर्स एंड इट्स फॉरफीचर्स. ठीक है. इश्यू ऑफ शेयर्स, वी विल सी अबाउट शेयर्स. शेयर क्या होता है? शेयर इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल इन सिंपल वर्ड. ठीक है. हियर वी विल डिस्कस ओनली इन सिंपल वर्ड्स. ओके. शेयर इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल का एक हिस्सा होता है. Let us understand this topic with an example. Okay. Suppose
XYZ Limited company, है ना? This is a company XYZ. It has a capital of रुपीज 1 लाख। XYZ के पास कैपिटल है कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपीज कैपिटल है XYZ का। So what a company does, company divides total of its capital in different parts. Company divides total of capital in parts. Each part is called as shares. Each part is called as shares. तो यहाँ क्या होगा? 1 लाख रुपीज को कंपनी एक रेट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कीप्स द वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीज 10। कंपनी अपने शेयर का वैल्यू क्या रखा है? एक शेयर का वैल्यू रुपीज 10। इन दिस वे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? जस्ट डिवाइड इट टोटल कैपिटल अपॉन वैल्यू ऑफ each share. So 1 lakh upon 10. In this way, we have 10,000 shares. We have 10,000 shares. कंपनी के पास 10,000 शेयर है ऑफ ₹1 each, ठीक है। अब दिस 10,000 शेयर्स ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। सो generally a normal public can purchase, see the value is ₹10, आप 10 रुपये दो एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। आपको कोई टेंशन नहीं, 10 रुपये का एक शेयर खरीद लो, आप कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर्स बन गए। सो इन दिस वे कंपनी गेट्स द कैपिटल। अब मान लो कंपनी को फिलहाल कंपनी को चाहिए 20,000 रुपीज़, है ना। कंपनी को कितना रुपीज़ चाहिए? 20,000 रुपीज़। तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी विल इश्यू 2,000 शेयर्स। कंपनी क्या करेगा? 2,000 शेयर्स इश्यू करेगा। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹1 lakh. That 1 lakh is divided in 10,000 shares of ₹10 each. Here कंपनी नीड्स अ कैपिटल ऑफ ₹20,000, ठीक है। कंपनी को अभी फिलहाल सिर्फ 20,000 रुपीज़ चाहिए। सो ही विल इश्यू 2,000 शेयर्स। ही विल इश्यू 2,000 शेयर्स। वो सिर्फ 2,000 शेयर्स इश्यू करेगा क्योंकि 2,000 इंटू 10 20,000 रुपीज़। कंपनी को 20,000 रुपीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और ये किसको इश्यू करेगा? ही विल इश्यू इट टू द जनरल पब्लिक। वो मार्केट में लाएगा, ठीक है, थ्रू द प्रोस्पेक्टस, है ना। वो सेल करेगा मार्केट में। अब जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी लगता है XYZ एक अच्छा कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दे विल परचेज दिस शेयर्स, ठीक है। दे विल परचेज दिस शेयर्स। अब हो सकता है ये शेयर कोई एक सिंगल पर्सन खरीद ले या डिफरेंट पर्सन्स खरीदें, तो जैसा भी हो कंपनी विल गेट ₹20,000 थ्रू दिस शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 पर्सन ABCD। A purchased 500 shares, B purchased 200 shares, C purchased 600 shares, and D purchased 700 shares, ठीक है। A सब्सक्राइब फॉर 500 शेयर। ए कितने के लिए सब्सक्राइब कर रहा है? 500 शेयर्स के लिए। B 200 शेयर्स के लिए, C 600 शेयर और D 700 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रहा है।
ठीक है। तो अमाउंट that A will pay rupees 5,000. A will pay rupees 5,000. B will pay rupees 2,000. C will pay rupees 6,000 and D will pay rupees 7,000. चार लोग अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किए। ए इन्वेस्ट कर रहा है 5,000, बी 2,000, सी 6,000, डी 7,000 एंड total of this four is 20,000. Through four person कंपनी गेट्स 20,000 रुपीज जो उसको चाहिए था, ठीक है। एंड दिस पर्सन्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। दिस पर्सन्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर द पर्सन्स हु परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी का शेयर खरीदता है दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। तो ए बी सी एंड डी आर शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड। ओके, तो इस तरह से शेयर्स होता है, ठीक है। इन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का स्ट्रक्चर, ये जो 1 लाख है इस 1 लाख को क्या बोलते हैं, ये जो 20,000 इस 20,000 को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये 200 शेयर्स 2,000 शेयर्स जो है वो क्या है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। The important topic which we will discuss today is structure of capital. ये समझना ज़्यादा जरूरी है। इस पार्ट का थ्योरी डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मीन्स हाउ अ कैपिटल इज फॉर्म्ड ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो in this we will see different kinds of capital. Capital का बहुत सारा टाइप्स बना है। It starts with first authorized capital. Authorized capital, maximum amount of capital which a company can hold. जो मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट कंपनी अपने पास रख सकता है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी के पास नहीं हो सकता, डैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। हम बुक के वर्ड्स पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल मीनिंग में समझेंगे हर चीज़ को, ठीक है। आफ्टर ऑथराइज्ड कैपिटल वी हैव इश्यूड कैपिटल। Issued capital, that part of authorized capital which is issued to public. Part of authorized capital issued to public. That's why it is called as issued capital, because हम लोग सेल कर रहे हैं, we are selling this capital to the this shares to the public. That's why it is called as issued capital. After issued capital, we have subscribed capital. Now, subscribed capital is a part of issued capital. It is a part of issued capital, that is
subscribed by the public। या पब्लिक एग्री कर रही है कि हम लोग इस इश्यू शेयर को परचेज करेंगे। पब्लिक एग्री हुए कि हम लोग क्या करेंगे, हम जो कैपिटल इश्यू हुआ है, जो शेयर्स इश्यू हुआ है, उसको हम लोग परचेज करेंगे। इस चीज़ के लिए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कंपनी के साथ। आफ्टर सब्सक्राइब कैपिटल there is fully paid up capital and not paid up capital, but before that I would like to discuss called up capital and uncalled capital। बुक में सब्सक्राइब के बाद डायरेक्ट पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल दिया है, बट हम यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल पढ़ेंगे सब्सक्राइब के बाद। कॉल्ड अप और अनकॉल्ड, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सपोज अ कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। इट मीन्स 1 लाख रुपीज से ज़्यादा कंपनी अपने पास नहीं रख सकता। कंपनी का जो टोटल वैल्यू होगा वो 1 लाख रुपीज ही होगा। ओके, नाउ सपोज कंपनी नीड्स सम मनी टू ग्रो और फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स बिजनेस, एंड फॉर दैट ही इश्यूड a capital of 20,000। company needs rupees 20,000 for the growth, for the development, or to purchase any assets or anything. Okay, so he issued shares worth rupees 20,000. Okay, now public agreed to purchase shares for rupees 20,000, so that is subscribed capital। कंपनी पब्लिक एग्री हो गए कि हम लोग जितना शेयर्स इश्यू हुआ है उतना परचेज करेंगे, सो डैट बिकम्स सब्सक्राइब कैपिटल। हियर सपोज अगर इश्यूड कैपिटल पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है ना, तो डेट पार्ट विल कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब कैपिटल, है ना। यहाँ पे एक पार्ट आता है और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल वो पार्ट जिसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं आया, वो कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। मान लो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि जितना इश्यू हुआ था पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, बट कंपनी को 20,000 रुपीज़ अभी फिलहाल एक साथ नहीं चाहिए। कंपनी डिड नॉट वांट ऑल द अमाउंट एट लम सम, so company asked for only 15,000। company asked its shareholders to pay only 15,000 rupees, so that 15,000 rupees is called capital। ध्यान रखना, called up capital जो कंपनी एक्चुअल में अपने शेयर होल्डर से बोल रहा है कि पे करो, जितना अमाउंट उनको रियल में पे करना है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और जो कैपिटल कंपनी अभी कॉल नहीं कर रहा है, मीन्स 5,000 कंपनी को फिलहाल नहीं चाहिए। कंपनी डिड नॉट वांट 5,000 रुपीज एट प्रेजेंट, ही विल आस्क अबाउट इट इन लेटर, है ना, बाद में मांगेगा। अभी ही इज आस्किंग ओनली फॉर रुपीज 15,000, सो 15,000 रुपीज इज कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, so here we can write called up capital, amount asked by company, or we can write demanded।
कंपनी जो अमाउंट एक्चुअल में डिमांड कर रहा है शेयर होल्डर से पे करने के लिए, डेट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। और जो अमाउंट कंपनी अभी डिमांड नहीं कर रहा है, डेट इज अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, नाउ फ्रॉम दिस, फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल वी गेट पेड अप और अनपेड कैपिटल। पेड अप कैपिटल and unpaid capital। पेड अप कैपिटल जो अमाउंट शेयर होल्डर्स पे कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना, एक्चुअली अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज पेड अप कैपिटल। एंड अनपेड कैपिटल अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज अनपेड कैपिटल। ठीक है, लाइक कंपनी आस्क्ड फॉर 15,000 रुपीज, okay, but shareholders paid only 12,000. For example, shareholders paid rupees 12,000 and did not paid rupees 3,000. Shareholders, okay. Shareholders paid rupees 12,000. The amount which is actually paid by the shareholders, that is paid up capital. Amount which is unpaid or the shareholders did not pay the amount, that is called as unpaid capital. So in this way structure of a company is formed. Okay, so एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स, शेयर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल। रिमेंबर, शेयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का पार्ट है। हम कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में बांट रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। तो इन दिस फर्स्ट वी हैव ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो कंपनी का मैक्सिमम वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी इससे ज़्यादा कैपिटल अपने पास नहीं रख सकता, that's why it is called as maximum amount of capital that a company can hold. Authorized capital से we get issued capital. Issued capital ये part of authorized capital है, ठीक है, याद रखना, issued capital authorized capital से निकल के आता है। कभी भी issued capital authorized से ज़्यादा नहीं हो सकता, it will be equal to or less than, ना, issued capital will be equal to or less than authorized capital. Okay, so part of authorized capital issued to the general public, ठीक है, जो सेल कर रहे हैं हम लोग मार्केट में, कंपनी जो अपना शेयर्स मार्केट में सेल कर रहा है, वो होता है इश्यूड कैपिटल। आफ्टर इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल है, ये पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल है। सब्सक्राइब जो है इश्यू के इक्वल होगा या लेस देन होगा, इश्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता सब्सक्राइब कैपिटल। तो दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, शेयर्स दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड कैपिटल, ये पार्ट ऑफ सब्सक्राइब होगा। कॉल्ड अप अनकॉल्ड इसका क्या होगा, इट विल बी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड, ये कंपनी डिमांड कर रहा है, कंपनी को फिलहाल जो अमाउंट चाहिए, दैट अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी, वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। जो डिमांड किया कॉल्ड अप, जो डिमांड नहीं कर रहा है वो अनकॉल्ड, ठीक है। नाउ दो दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स, व्हेन शेयर होल्डर्स पे द कॉल्ड अमाउंट, ठीक है, पे किसको कर रहे हैं, कॉल अमाउंट को जब शेयर होल्डर्स पे कर रहे हैं, दैट इज पेड अप कैपिटल, ठीक है। और कॉल्ड अमाउंट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो अनकॉल्ड अनपेड कैपिटल, ठीक है। अनकॉल्ड और अनपेड, इसको मिला मत देना, दिस इज डिफरेंट, ये दोनों पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। ये यहीं खत्म हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल ये यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैपिटल।
ठीक है, इस टाइप से इसको समझो. इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, डोंट कंफ्यूज. Okay friends, that's all for today. Thank you, and please like my page.